Hi Shilpa, let's start the session. Okay. Yeah. Okay. So hello everyone. So my name is Saurabh Bansal. Currently I'm a mentor at GeeksforGeeks. In my previous job, I have worked as a software engineer as well. So today I will be. So let me introduce our audience. So good evening, everyone, and welcome to Live the Code 3.0. We are thrilled to have you join us today for what promises to be an insightful and enriching session. My name is Shilpa, and I'll be your host for this event, presented by Geeks for Geeks ADGIPS chapter. Today, we have the privilege of learning from an experienced and talented MERN Stack developer, Mr. Saurabh Bansal. Whether you are here to sharpen your skills for upcoming hackathons or to gain a deeper understanding of full stack development, you are in for a treat. Saurabh will be sharing his knowledge on the MERN stack, MongoDB, Express.js, React.js, and Node.js, four powerful technologies that together form the backbone of modern web development. As many of you know, the MERN stack has become a good to go solution for developers looking to build a scalable and efficient web applications. Today's session, titled Unlocking the Power of MERN Stack with Saurabh Bansal, is all about diving deep into this technology stack. Saurabh will be unraveling the intricacies of each component and offering tips and best practices and strategies that you can apply to your own projects. Let me tell you a bit about our speaker, Mr. Saurabh Bansal. He is a seasoned MERN stack developer with extensive experience in building and deploying full stack applications. Over the years, Saurabh has honed his skills and developed a keen understanding of what it takes to succeed in the world of web development. He is not only a developer, but also a mentor who enjoys sharing his knowledge with others. Before we dive into the session, a quick note. We encourage you to actively participate. Feel free to drop your questions in the chat and we will have a Q&A segment towards the end where Saurabh will address them. We want this to be as interactive as possible. So don't hesitate to ask anything related to the MERN stack or full stack development. And with that, it's time to get started. Please join me in welcoming Mr. Saurabh Bansal to take us through unlocking the power of MERN stack. Saurabh, over to you. Okay, thank you Shilpa for this amazing introduction. So hello everyone. Okay, so I think my voice is very clear to everyone. So if it is not, please let me know in the chat section. Okay, I think my voice is coming clear to everyone. Okay, so today we are basically discussing about the MERN stack. So I have a lot of experience on MERN stack. So basically, what is MERN stack? So basically, MERN stack is a part of web development. In the field of web development, we basically build the websites. Okay, so in the websites, when we are building the website, so basically there are a lot of stacks like MERN stack, mean stack, and there are a lot of stacks. Okay, but the most famous one, that is a MERN stack. Okay, so if we talk about the MERN stack, the full form of MERN is M stands for MongoDB, E stands for Express.js, R stands for React.js, and N stands for Node.js. If I talk about a little bit of roadmap, what is the roadmap for becoming a MERN stack developer or a developer or a software developer? Let me talk about a little bit about the roadmap. Then we are going to discuss about the hackathon as well. So what you can do in the hackathons and what is going to be the like what we can do for that. Okay, so I'm sharing my screen. Okay, so I'm sharing my screen. I hope it is visible to everyone now. Okay, let me check it on my that. Okay, so is it visible to everyone? Please let me know in the chat section. Is it visible to everyone? Please let me know in the chat section.
Okay, so if we talk about the basically, just give me a moment. Okay, if we talk about the roadmap to basically a web development, I'm not talking about the basically not the MERN stack. I'm talking about the whole web development. If we talk about the roadmap of MERN stack or the web development, we are here. So firstly, we have to learn the HTML. Then we have to go for the CSS part. Okay, so HTML is basically to build the structure of a website. Then after creating the structure of a website, then we have to go for CSS to design the website. Basically, if you want to create some animations, or maybe you want to make your website colorful, or maybe you want to add some other things like input output and so on. If you want to add these things, you have to learn about HTML and CSS. Now let's talk about the main thing or the heart of web development. Okay, that is called JavaScript. Okay, so everyone has to learn JavaScript. Okay, so if you are if you want to become an Android developer, or you want to become a web developer, you have to learn JavaScript. So most of the time of the web development, you have to invest on this JavaScript. Okay, invest a lot of time, practice a lot of problems, and make some websites. Okay, also make some projects over from this, make some projects only from this stack. Okay, use HTML, CSS and JavaScript, make a lot of small big projects. Okay, when you will make a lot of projects using HTML, CSS and JavaScript, then you are going to get a lot of things, that how the idea of making a website, idea of basically why we are going to use other technology, why we have to use other technologies, make some good projects out of these technologies. Okay, you have to make a lot of projects out of this technology if you want to be a good web developer. Okay, then after being after making a lot of projects in this part, then you can move to a stack. Okay, basically you can learn a lot of things. You can go for the MERN stack, as well as you can go for the mean stack as well. Okay, mean is nothing. If you see that R and A is different in both the stacks, basically R stands for React, A stands for Angular. Okay, if in this part, in this roadmap, we are just talking about the MERN roadmap. Okay, so if I go for after HTML, CSS, JavaScript, you have to learn a little bit about Node.js. Firstly, learn a little bit about Node.js, or maybe you can learn a full Node.js. Okay, so that's my teaching style, and that's how I also learned MERN stack. So basically, just learn about the Node.js. You can learn some basic topics, how to create export, import, export, import. You have to learn about export, import. Okay, some basic things about Node.js, that how to create packages, how to export, import, how to make modular codes and other things. Okay, after that you can move towards the React part. Okay, that is the most important thing. And if you are a fresher, then you are definitely going for a job, and they are going to ask you a lot of questions on JavaScript and React.js. So majorly the interview part is going on the part of JavaScript and React.js. So you have to learn about the React.js. On the React.js part, create a lot of projects. Okay, make a lot of projects. Okay, start with some small projects, and then you can go further with the big projects as well. Then firstly you can start with some like to do app, maybe there is a counter app, or maybe you can go for a tic tac toe, or maybe small games. And after that you can go for some medium projects, like e-commerce website, maybe a food ordering website, maybe a anything else like this kind of website. Maybe you can go for a static website as well. Okay, after creating the small and medium websites, then go for some good projects, like some dynamic website. If I talk about the web apps, you can go for the web apps as well. Like you can create a LinkedIn, like features like LinkedIn, or maybe you can go for Instagram type basically websites, where you have to do a lot of things in that part. Okay, you can if you want to make a major project in current times, so you have to work on a project that for 2 3 months. Okay, so after learning these things, you are now very much you are very good. After creating these things, after learning these things, you are very good at the front end part. Okay, now you are very good at front end development. You are very good at front end development. But if we talk about the backend part, if we talk about the backend part if we talk about the backend part okay, so in the backend part, firstly you have to now you have to learn about more about Node.js. Then go for more about Node.js, that how to create. You firstly have to learn about HTTP, that how to create server from Node.js. Then after doing this, you have to go for Express. Then go for Express.
We can also create server using HTTP. Then why we are creating the server using Express? Then you can go for MongoDB. MongoDB is a database. Okay, basically you can create your data, update your data, you can connect your application with a MongoDB, how to connect that with database. And now the major things of this MERN stack is done, or the web development is done. Then you can learn about the Git GitHub as well. Okay, so I think you all know about the Git GitHub. So Git GitHub is basically a VCS, that is version control system. So just learn about these things. So these are very like essential topics, or the main topics you have to learn if you want to be a good developer. Okay, but this is not like everything. This is not like everything you have learned about the web development. Okay, now if we talk about the current scenario of the job market, there is a lot of competition in the job market. If you want to be good at MERN stack, or become a good web developer, then you have to learn everything. Okay, you have to learn about some famous libraries. Let me talk about some famous libraries. Like some famous library, if I talk about, so firstly you can learn about Redux. Okay, maybe you can learn for RTK, that is Redux toolkit, that is the updated version of Redux. Okay, just learn about Lodash. Okay, that is also important library. Then you can also learn about Tailwind CSS, that is gaining a lot of popularity. It is used to create some amazing websites. If you know Tailwind CSS, then you can learn the Redux UI. Okay, that will help you to create beautiful UIs. The currently the Magic UI is also very trending, so you can have these things as well. Okay, so there is a lot of libraries, you have to learn a lot of things. And if you want to, these are the types of basically front end libraries. We In this part, I'm just talking about the front end libraries. But if you want to be like in the next level, okay, if you want to be a very 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 good developer, then you can learn for the backend part. You can learn more of the things, like you can learn about the Kafka. Okay, Kafka is very important. Kafka, basically every big industries, or every industry currently now at times using Kafka, or maybe we can use the Redis part. Okay, that how to use basically the this is kind of a new databases. Okay, you have to use your MongoDB type database. Okay, you have to use the Redis as well, so Redis is also very important. So this is basically a roadmap, and if you want to be a great developer, then you have to learn all these things. Okay, so I think these are very much clear. So there is one question, which is more preferable, Angular or React? So if we are talking about the job market, as well as if we are talking about current scenario, so React developers are more in demand. So I think you have to learn React first. Okay, firstly just learn about React and be good at JavaScript. If you are good at JavaScript, then you can learn any technology, any web development part, any web development technology. Okay, so be good at firstly JavaScript, then you can learn any technology. But according to the job market, you have to go for React. So this is the thing, basically this is the part where you have to learn more about the web development, how you can be a good web developer. Okay, so let me share one of my podcast with Sandeep Jain sir. I think you all know about Sandeep Jain. So this is one of my podcasts, so I will be sharing this link over the chat. Okay, so you can see this basically this podcast. And also I have done more podcasts with Sandeep sir. Okay, so if I talk about, so let me just put that part in the chat section. Okay, so how I can put that in chat? Okay, so I will give you that link. Okay, okay, I will give this links to Hardik, and he will share you with you. Or maybe you can go for the Sandeep Jan channel, and where you can find this podcast, this particular podcast. Okay, so there is a lot of things. Now let's come on to the hackathon part. So basically, if you are going for a hackathon, so basically hackathons are preferably for that part where you have to solve the real life problem. So I'm going to discuss two three real life problems where you can make some projects. I don't know about much of your hackathon, so let me discuss some of the real life problems. So hackathons are basically organized to solve the real life problems which companies are not having some ideas, or maybe not some great ideas. So they used to conduct a hackathon so that they will get some unique ideas for that. So if I talk about one idea that is basically a real life problem for me as well. So if you we talk about the reels part, or maybe the short videos part, so they are uh, so if we talk about like that part, so अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि रील्स वगैरह जो होते हैं, रील्स वगैरह में क्या होता है कि इफ आई एम जस्ट
ओवर हेयर एंड मैं उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करता हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, मुझे पता भी नहीं लगता कि कितना टाइम हमारा वेस्ट हो गया है. So we can make something, a website or maybe a platform where we can have a platform like कि हम वहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल रील्स कोई डाल सकता है, वहाँ पर आप एआई का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट का इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि यूआई बनाने के लिए यू हैव यूज द मर्न स्टैक, बट फॉर दैट पार्ट की अगर कोई भी उसमें वीडियो अपलोड कर रहा है तो वो सिर्फ एजुकेशनल टाइप वीडियो होगी. तो इस टाइप का आप एक प्लेटफॉर्म बना सकते हैं. इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड प्रॉब्लम, सो सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने इसको फेस करा होगा आई थिंक, कि इफ आई एम गोइंग फॉर टू बाय सम कार और मे बी सम टू व्हीलर और एनीथिंग एनीथिंग रिलेटेड टू ऑटोमोबाइल. सो क्या होता है कि वी हैव मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स और मल्टीपल डीलरशिप्स. सो क्या होता है, जैसे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पे 3-4 डीलरशिप्स हैं. इफ आई गो अबाउट कि मुझे एक वोक्सवैगन की कार लेनी है, तो मैं 4 डीलरशिप पे जाऊँगा सेम मॉडल के लिए. मुझे अलग-अलग बेसिकली प्राइजेस पे करने पड़ते हैं, ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू इज़ कि जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम होटल के प्राइसेस कंपेयर कर सकते हैं. सिमिलरली यू कैन मेक सम वेबसाइट्स जहाँ पर हम ऐसे ऑटोमोबाइल्स की प्राइसेस कंपेयर कर रहे हैं. सो दैट विल बी अ रियली गुड थिंग कि हमें 4-4 5-5 शोरूम्स पे जाके बार्गेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, एंड दैट विल बी अ वेरी गुड आइडिया. सो सिमिलरली यू कैन ऑल्सो सी कि अगर आप अपने रियल लाइफ में देखें तो क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, एंड यू कैन डेफिनेटली कोड देम. एंड इफ यू आर नॉट एबल टू कोड देम, जस्ट गो ऑन फिग्मा. सो आप उसका एक आइडिया क्रिएट कर सकते हैं, आप उसके लिए एक बेसिकली एक डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं. इट इज नॉट इंटरेस्टिंगली कि हैकाथॉन्स में ऐसा नहीं होता कि यू हैव टू क्रिएट द प्रोडक्ट. आपका आइडिया इतना स्ट्रांग होना चाहिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी यहाँ पर क्रिएट करने में, या कोई भी ऐसी चीजें जो आप आंसर दे सके, सामने वाले को सेटिस्फाई कर सकते हैं. दैट इफ आई गॉट द टाइम, कि अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला था, शायद आपने हैकाथॉन में उतना टाइम नहीं दिया, बट इफ आई गेट द टाइम सो मैं उसको क्रिएट कर लूंगा, ठीक है. तो ऐसा कुछ आप बना सकते हैं, ठीक है. तो ऐसा मतलब ऐसे आप खुद सोच सकते हैं कि आपके रियल लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आती है, वेयर यू कैन सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स यूजिंग दैट एआई पार्ट और मे बी द वेब डेवलपमेंट पार्ट. सो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे जाइए. ऐसा नहीं कि जो प्रॉब्लम्स पहले से हैं हमने उसी का सोल्यूशन निकाल दिया है, पहले से उसका सोल्यूशन है. मे बी अभी जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई है उसका कोई सोल्यूशन होगा, बट कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो ज़्यादा नोन नहीं है, या फिर आप उनका बेटर सोल्यूशन दे सकते हैं मे बी, तो आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं. ऐसी कुछ चीज़ें, है ना, कि ऐसी और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है. जस्ट सी ऑन योर रियल लाइफ थिंग्स, है ना, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ऐसी है जो हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड मे बी यू कैन गो फॉर दैट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द Q&A राउंड. So please put your questions in that part. And also one thing, before Q&A session I want to add. So if you are going for like the MERN stack, so basically what I prefer is कि अगर आप MERN stack सीखने जा रहे हैं, ठीक है, तो बी गुड एट डीएसए एज वेल. सो आपको बेसिक डीएसए आना चाहिए, एंड बेसिक से मेरा मतलब है बेसिक टू मीडियम, ठीक है. आपको डीएसए आना चाहिए, एटलीस्ट यू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द डेटा स्ट्रक्चर्स. आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर्स के एटलीस्ट थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए. आपको पता होना चाहिए आरएस कैसे काम करते हैं, लिंक लिस्ट कैसे काम करती है, हाउ ट्रीज वर्क, ट्री डेटा स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, ग्राफ्स कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स आपको पता होना चाहिए. थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना चाहिए. फॉर दिस यू कैन फॉलो माई वन ऑफ माई यूट्यूब प्ले लिस्ट. ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करके एटलीस्ट उसको दिखाता हूँ आपको, कि वहाँ पे जाकर आप कुछ कुछ फॉलो कर सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि मैंने वहाँ पे एक बोरिंग सा लेक्चर बना रखे हैं. एंड सो इट इज़ काइंड ऑफ अ 100 days लीड कोड चैलेंज. सो व्हाई आई एम नॉट एबल टू शेयर माय स्क्रीन, इज माय स्क्रीन visible to you all? Okay, so now I'm sharing my screen. So this is basically on the channel of Edgeless. So we have started one 100 days lead code challenge in my previous company. So here basically a lot of students have followed this, and they have gone a lot of profit, and some of them have got a lot of offers as well. So this is basically a 100 days lead code challenge where you can follow this challenge and be good at DSA, because the starting problem is of loops, and then we have started with the arrays, then we have started with the string, then we are going with the data structure, so that you can feel comfortable with it. And अगर आपने कोई कोडिंग ही नहीं करी आज तक, कभी कुछ कोड ही नहीं करा है, सो यू कैन गो फॉर दिस चैनल. ओके, ये एक्चुअली चैनल है जिसपे मेरा 100 डेज लीड कोड चैलेंज है. सो यहाँ पर एक और प्लेलिस्ट है अनलॉकिंग डीएसए. ये पूरी नहीं हो पाई थी, बट इसमें जितना कंटेंट है एटलीस्ट आपको बेसिक सिखा सकता है कि वेब डेवलपमेंट करने से पहले एटलीस्ट आप बेसिक आरएस वगैरह का नॉलेज ले जाएं, एंड बेसिक आपको लूप्स वगैरह बहुत अच्छे से आते हो, तो इसको फॉलो कर सकते हैं. एंड डू चेक इट आउट. सिर्फ एक दो वीडियोस एटलीस्ट देखना, उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बनता तो देन यू कैन आई जस्ट अ रिक्वेस्ट कि डू चेक इट आउट. एंड इसको आप देख सकते हैं, 100 डेज लीड कोड चैलेंज, इसको आप देख सकते हैं. एंड आई हैव मल्टीपल सीरीज एज वेल. सो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, तो मैं अगर गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस करता हूँ,
तो देयर इज़ वन मोर चैनल ऑफ गीक्स फॉर गीक्स प्रैक्टिस। सो वहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है जो जिसको आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप डीएसए को स्पेशली फॉलो करना चाहते हैं। तो डीएसए इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई एम स्पीकिंग ओवर हियर। सो यहाँ पे देख सकते हैं एक प्रॉब्लम ऑफ द डे होता है, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने शूट करी है, कुछ प्रॉब्लम्स और किसी लोगों ने शूट करी है। सो देयर इज़ वन मोर प्लेलिस्ट ऑफ माइन, 100 days अल्टीमेट इंटरव्यू चैलेंज। सो ये भी कंप्लीट नहीं हुई अभी, बट सून वी आर प्लानिंग टू कंप्लीट इट। ओके, इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है, जैसे यहाँ पर एक प्लेलिस्ट होगी लिंक लिस्ट की, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट लिंक लिस्ट, और यहाँ पे 25 वीडियोस में पूरा लिंक लिस्ट को देखा गया है, तो इसको देख सकते हैं आप। ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्ट्रॉन्ग योर लिंक लिस्ट, बट उससे पहले आपको और अदर डेटा स्ट्रक्चर्स आना चाहिए। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस होल लिंक होल सीरीज। सो यहाँ पे 6 घंटे पूरे लगे थे सिर्फ लिंक लिस्ट को पढ़ाने में। सो ये सारी चीज़ एक्सप्लोर कर सकते हो। सो वट आई विल बी डूइंग इज कि मैं इन सब का लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग इट विद हार्दिक। सो हार्दिक विल शेयर यू विद। ओके, मुझे नहीं पता अभी कैसे इसको शेयर करना है, सो आई डोंट नो कि इसको शेयर कैसे करना है मुझे। तो बट मैं हार्दिक के साथ सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा। और मे बी हार्दिक, आई एम सेंडिंग यू ऑल दिस इन माई प्राइवेट चैट, सो प्लीज सेंड दिस ऑल दिस थिंग to the students. Okay, maybe they will get some help from this. Okay, please share this. I'm also sharing this one more channel as well. Okay, and also I'm going to share the podcast. Okay, just give me a moment. If I talk about GFG, and so we can share this. Okay, so Hardik will share everything with you guys. Okay, and also I'm going to share one more link, so there you will get all the links. Okay, this is my personal link. Obviously you can have guidance from me as well. Like if you want to follow me on LinkedIn, so you will get all these things on my link tree, or maybe you can go on LinkedIn and search for Saurabh Bansal Geeks for Geeks, and you can do something like that. Okay, so what I will be doing over here now, the next time, next thing that we are going to do is going to be a Q&A round, so where you can ask some questions to me. Okay, so I welcome you all, so you can ask some questions for to me. रोज कितना टाइम देना चाहिए हमें मर्न के विल गेट ऑन द हैंड्स ऑन बेसिक। तो यार ये इट डिपेंड्स थ्रू, इट डिपेंड्स कि आपको कितना आता है एंड आपका लर्निंग लेवल क्या है। ठीक है, आपका लर्निंग लेवल की, जैसे कि मैं बात करूँ कि अगर आप किसी को बहुत जल्दी समझ आ जाता है, किसी को लेट समझ आता है, तो मिनिमम आपको 5 to 7 hours फॉर लाइक 6 months तो देना चाहिए। वेब डेवलपमेंट क्या मतलब, कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो तो यू हैव टू गिव 5 to 7 hours डेली, ऑन डेली बेसिस, एंड कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, आपको कितना आता है, आपकी कितनी कोपिंग पावर है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कितना ज़्यादा बेसिकली डिसिप्लिन से सीख रहे हो। ठीक है, कितने ज़्यादा आप कंसिस्टेंट हो। इफ़ यू आर डूइंग द कोड डेली, तो आपकी जो कोडिंग है वो वैसे ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी 15 दिन कर लिया मंथ स्टार्ट, फिर 10 दिन नहीं कर रहे, तो वो फिर एक बन नहीं पाता यार। मतलब आपको इस तरीके से काम करना पड़ता है कि आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, एंड मिनिमम 5 to 7 hours तो होनी चाहिए। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो लेट्स टेक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटलीस्ट कितने मेन प्रोजेक्ट होने चाहिए मॉर्न में? यार मर्न में अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द मेन प्रोजेक्ट, तो 2 प्रोजेक्ट्स एटलीस्ट मेन होने चाहिए। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कि मेजर प्रोजेक्ट, मैं बताता हूँ कि मेजर प्रोजेक्ट्स कितने होने चाहिए। तो मेजर प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो 2 होने चाहिए, और वो 2 प्रोजेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जिसमें आपने एटलीस्ट कम से कम काम करा हो 2 से 3 महीने। मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है जब हमारे कोड्स बड़े हो जाते हैं, फ्रंट एंड बहुत बड़ा हो जाता है, बैक एंड बहुत बड़ा हो जाता है, कोड भूल जाते हैं हम जो पुराना कोड करा हुआ है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम बेसिकली। वहाँ पर अगर आपको ना एक इंडस्ट्री वाला फील चाहिए, कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हमारी इंटर्नशिप्स नहीं लग रही या जॉब नहीं लग रही, सो गो ऑन जस्ट फॉर गो फॉर प्रोजेक्ट्स। आप जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हो, प्रोजेक्ट आपका लेवल डिसाइड करेगा कि आपके पास किस टाइप का लेवल है। अगर आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, तो यू आर बेसिकली, दैट इज बेसिकली समटाइम्स इक्वल टू दैट इंटर्नशिप्स एज वेल। ठीक है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि यार इंटर्नशिप नहीं मिल रही तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, और प्रोजेक्ट ऐसा होना चाहिए जो रिज्यूमे में मेंशन करो, कम से कम 2-3 महीने काम कराओ, अच्छे से, ईमानदारी से, रेगुलरली, ऑनेस्टली इतना काम कराओ। ओके, थैंक यू सो मच सर। सर ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि इम्प्लीमेंट लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लाइक हाउ सो टू डील? फर्स्टली यार, मतलब अगर लॉजिक इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो फर्स्टली व्हाट यू कैन डू इज़ कि पहले अपना बेसिक डीएसए को इम्प्रूव करो, जैसे कि लूप्स,
लूप्स वगैरह आप इम्प्रूव करो, अपने एरेज को अच्छे से करो, थोड़ा सा स्ट्रिंग्स को पढ़ लो एंड थोड़ा बहुत अदर डेटा स्ट्रक्चर्स की नॉलेज ले लो, फर्स्ट थिंग ये। उसके बाद कुछ डीएसए क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद जस्ट गो फॉर कि पहले आपने कुछ प्रोजेक्ट्स देख के बनाए, जैसे कि यूट्यूब से देख के बना लिया, या फिर आपने कोई भी कोर्स वगैरह अगर परचेज कर रखा है, तो देन गो फॉर दैट वीडियोस, आप उन वीडियोस को देख के प्रोजेक्ट्स बनाओ। उन प्रोजेक्ट्स को एक बार मत बनाओ, 2-3 बार बनाओ, शुरुआत के इनिशियल प्रोजेक्ट्स को, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स को। और उन प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद आप स्टार्ट करिए कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स, और बड़े प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उनको भी पहले देख के बनाइए, फिर देखने के बाद कुछ ट्राई करिए खुद से, धीरे-धीरे खुद से ट्राई करते रहिए। एक आइडिया लीजिए, खुद से ट्राई करिए, एक आइडिया लीजिए, खुद से ट्राई करिए। जस्ट गेट अ अप्रोच, पहले अप्रोच के साथ कोड लिखना सीखो, ठीक है? कि किसी ने आपको एक अप्रोच बताई, उससे आपने कोड लिख दिया। देन गो फॉर द अप्रोच पार्ट, कि अब अप्रोच मुझे खुद सोचनी है। तो धीरे-धीरे लॉजिक बनता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एकदम से कोई प्रॉब्लम उठाई और आपका एकदम से लॉजिक बन जाता है, ऐसा किसी के साथ नहीं होता। मेबी अगर तुम भी अभी शायद मुझे कोई एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दो या कुछ भी प्रॉब्लम दो, तो डिपेंड करता है कि उस टाइम मेरा माइंडसेट कैसा है, कि उस टाइम लॉजिक बन गया कि नहीं बना। हो सकता है कि वो शाम तक लॉजिक बन जाए, तो ऐसा कुछ होता है। एंड वन थिंग, अगर आप अच्छे से कुछ भी कोई भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हो, तो एक चीज़ होना चाहिए। जैसे अभी मेरा माइंडसेट क्या रहता है, अगर मैं कोई भी वेबसाइट देखता हूँ, तो उस वेबसाइट पे कोई भी फीचर देखते हुए मुझे मेरा माइंडसेट हमेशा ऐसा चलता है, यार ये इस पर्सन ने कैसे, इसके डेवलपर ने कैसे इम्प्लीमेंट करा होगा। सो इस टाइप का माइंडसेट आपका भी चलना चाहिए, और ये खुद से आता है थोड़ा-सा, ठीक है? तो ये धीरे-धीरे आएगा, तो इस टाइप से आप कर मतलब सकते विद प्रैक्टिस ये चीज़ अपने हैं। आप ही डेवलप हो हाँ, जाएँगी। मतलब प्रैक्टिस इज़ द की, प्रैक्टिस तो सबको ही पता है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर चीज़ की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, बट दीज़ आर द काइंड ऑफ थिंग्स, कि पहले अपना बेसिक डीएसए थोड़ा-सा इम्प्रूव करो, उसके बाद गो फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट्स, देन गो फॉर मेजर प्रोजेक्ट्स। तो ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। हुँ। सर वेबसाइट क्लोन बनानी चाहिए कि लाइक उसमें हाँ हम यार, क्या? मतलब बना सकते हैं, वेबसाइट क्लोन्स आर वेरी ग्रेट आइडियाज़। वहाँ पर आपको गुड अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। बट उनको ना, मतलब प्रेज़ेंट करने का एक डिफरेंट वे होना चाहिए। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊँ कि लेट्स से इफ आई जस्ट क्रिएटेड अ लिंक्डइन क्लोन, मैंने एक लिंक्डइन का क्लोन बनाया, या फिर मैंने इंस्टाग्राम का क्लोन बनाया, उसको इंस्टाग्राम नाम मत दो बस, उसको कुछ और नाम दे दो। ठीक है? अच्छा। उसको कुछ और नाम दे दो, तो वो तुम्हारा प्रोजेक्ट थोड़ा-सा यूनिक पार्ट में आ गया। ठीक है? कि जैसे मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई, मैंने उसका नाम दे दिया वन स्टॉप। अब ऐसी कोई वेबसाइट प्रेज़ेंट नहीं है ना मार्केट में, तो हाँ, हाँ। इंटरव्यूअर को ऐसा नहीं फ़ील होगा कि यार वो ई-कॉमर्स वेबसाइट है। सो क्लोन बनाना बहुत अच्छी बात है, उसके क्लोन्स करिए, सारी फंक्शनैलिटीज़ कॉपी करिए, क्योंकि यूनिक आइडियाज़ आना बहुत सबके लिए पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है? तो क्लोन्स करिए, बट उसमें थोड़े-थोड़े चेंजेस कर दीजिए, जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट का कुछ मिक्सचर सा बना दीजिए। कि जो फीचर्स उसमें अच्छे लगते हैं उसमें डाल दीजिए, ऐसा-ऐसा कुछ मिक्सचर्स बनाइए, सो दैट विल बी वेरी गुड। मतलब हमें बेसिकली कोई भी वेबसाइट बनाने से पहले थोड़ा-सा रिसर्च वर्क करके हुँ, जैसे हुँ, 2-3 वेबसाइट्स हो गई, उनका हुँ। मर्ज करके फिर हमें करना चाहिए, राइट? मतलब ऐसा कर सकते हो, और इनिशियल डेज़ में जब आप लर्निंग में हो, तो प्रॉपर क्लोन बना सकते हो, जस्ट फॉर लर्निंग पार्ट, वो तो बना ही सकते हो। एंड अगर इन प्रोजेक्ट्स की बात करूँ, तो बस उनको नाम थोड़ा-सा डिफरेंट दे दीजिए, ताकि वो एक यूनिकनेस क्रिएट कर दें आपके साथ। ओके। सर एक क्वेश्चन आया है कि डू यू थिंक वेब डेवलपमेंट इज़ सैचुरेटेड इन इंडस्ट्री? ठीक है यार, मतलब एवरीथिंग इज़ सैचुरेटेड, मेरा इस पे आंसर हमेशा ऐसा रहता है कि हर चीज़ ही सैचुरेट हो चुकी है, ठीक है? मैं कुछ भी कह दूँ आपसे, आप बताओ किसमें कॉम्पिटिशन नहीं है? इफ आई जस्ट गो फॉर द रेस्टोरेंट पार्ट, कि मैं अगर रेस्टोरेंट खोलने जाऊँ, तो मार्केट में इतने सारे रेस्टोरेंट हैं, आप खुद देखो ज़ोमैटो, स्विगी निकाल के हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, कभी-कभार हम ऑप्शंस में ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैं वेब डेवलपमेंट की बात करूँ, तो हाँ यार, ऑब्वियसली सैचुरेटेड नहीं है, बट क्राउडेड मैं कह सकता हूँ इसको, बट अच्छे डेवलपर्स की शायद अभी भी बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मल्टीपल ऑफर्स है, ठीक है? इतने ऑफर्स है कि मैं उनके डेली देख रहा हूँ कि वो डेली मुझे बोलते हैं, सर कि आज ये कंपनी क्रैक हो गई, ये कंपनी क्रैक हो गई, ये कंपनी क्रैक हो गई। इफ यू आर गुड, तुम्हारे लिए कोई मार्केट सैचुरेटेड नहीं है। देखो, मुझे किसी ने एक काम बोला था कि किसी भी काम में घुस जाओ, पैसा है उस काम में, बस जो जस्ट यू हैव टू बी गुड एट दैट। तो यही मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको किसी भी लाइन में अच्छा होना है, तो जस्ट गुड गुड एट दैट। आप उसके 10% में या 5% में आ जाओ उस लाइन के, तो आपको अपने आप पैसा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है? बीइंग अ मंच स्टैक डेवलपर, मैं ये चीज़ नहीं मानता कि वो सैचुरेट हो चुकी है। अभी भी अच्छे डेवलपर्स की बहुत कमी है। मैं अभी जस्ट तुम्हारे इस सेशन से पहले भी एक इंटरव्यू ले रहा था, एंड आई जस्ट रिजेक्टेड द बेसिकली द कैंडिडेट। क्यों? क्योंकि नॉलेज ही नहीं है। सब अपने आप को मंच स्टैक डेवलपर कह रहे हैं, आता किसी को नहीं है, ठीक है? हाँ जी। हुँ, मतलब करने जाओ तो एकदम अच्छे से करो, हुँ, हुँ, मतलब आप ये बस। कहना चाह रहे हैं। हुँ। सर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मैंने अपनी रिज्यूमे में 3-4 हेवी प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और मेरे रिज्यूमे का 80 एटीएस स्कोर भी 80 प्लस है। स्टिल रिज्यूमे हाँ। शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है। यार, ये ना मतलब बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इसके लिए क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म्स पे अप्लाई करो, जैसे कि नौकरी हो गया, लिंक्डइन हो गया, हायरिस्ट हो गया, हायरेक्ट हो गया।
एंड इस तरह के और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं। पहली बात तो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई करो। एंड ये ना मतलब बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, इसको मैं ना डार्क फेज कहता हूँ। ये वो वाला फेज, मुझे ऐसा लगता है वो वाला फेज होता है जब आपको बहुत कुछ आता होता है, अगर आपने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स डाले हैं, तो मे बी आई एम अज्यूमिंग कि आपको बहुत कुछ आता होगा। बट ये वो वाला फेज होता है जहाँ पर हमें बहुत कुछ आने के बाद भी जॉब नहीं लग रही होती, तो ये वाला फेज ना चला जाता है। ये मतलब वो वाली कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि ये वो रात होती है जो बस एक दिन आने से पहले होती है, और ये बहुत ज़्यादा मतलब आपको डार्क फेज पे लेके जाती है, जहाँ पर आपका मन करता है कि कोडिंग भी छोड़ दूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँ। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। फिर 15 दिन तक मैं बहुत परेशान रहा था, बट आफ्टर 15-20 डेज़ मुझे ऑफ़र्स आने लगे थे, और जब आपको ऑफ़र्स आने लगते हैं, तब आपको मल्टीपल ऑफ़र्स आ जाते हैं। और इसके लिए बेसिकली क्या कर सकते हो, अगर आप थोड़ा-सा इन्वेस्ट कर सकते हो, सो मे बी यू कैन गो फॉर लिंक्डइन प्रीमियम, और मे बी नौकरी प्रीमियम, तो वो आपकी ज़्यादा अच्छे से हेल्प कर देगा, अगर आपको ऐसा लगता है। और एक प्लेटफ़ॉर्म है, अगर आप उसको मतलब बहुत ज़्यादा अंडररेटेड है, बट उस पे बहुत सारी जॉब्स है, दैट इज़ इंटर्नशाला। तो इंटर्नशाला पे आपको जॉब्स भी मिलती है, इंटर्नशिप नहीं मिलती सिर्फ़, ठीक है? तो आप उसको भी फ़ॉलो कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर, एक और डाउट है कि प्रोजेक्ट बनाने से पहले डिज़ाइन का कोई आइडिया ही नहीं मिलता है। लाइक अगर खुद हुँ। से कुछ सोचना हो कि पेज पे क्या-क्या होना चाहिए। हाँ यार सो मोहम्मद, आई कैन फ़ील यू। सो ये मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे यूआई बनाना पसंद भी नहीं है, एंड मैं डिज़ाइनिंग में तो बहुत ही ख़राब हूँ, मतलब कि सोचने में डिज़ाइनिंग वगैरह, क्योंकि मेरी ड्राइंग भी बहुत ख़राब थी, तो दिस इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। सो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं फिग्मा पे सबसे ज़्यादा जाता हूँ, सर्च करता हूँ फिग्मा पे। फिग्मा पे आपको डिज़ाइन्स मिल जाते हैं। या फिर क्या करता हूँ यार, जैसे कि लेट्स से इफ आई एम बिल्डिंग सम वेबसाइट, तो मैं सबसे ज़्यादा तो पहली बात तो फ़ोकस उस पे बोलता भी हूँ स्टूडेंट्स को भी, और आपको भी करना चाहिए, कि उसके लॉजिक और इम्प्लीमेंटेशंस पे और डिज़ाइनिंग पे कम फ़ोकस भी करोगे तो चलेगा। बट आपको डिज़ाइनिंग पे अगर ज़्यादा जाना है, तो व्हाट यू कैन गो फॉर कि फिग्मा पे जा सकते हो, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती है जो आपको आइडियाज़ देती हैं कि प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। एंड व्हाट यू कैन डू इज़, और अगर आपको भी मेरी तरह यूआई बनाना पसंद नहीं है, तो आप उसको चैटजीपीटी से बनवा सकते हो। चैटजीपीटी में आजकल एक नया फीचर आ गया है, जहाँ पर आप बेसिकली स्क्रीनशॉट्स ऐड कर सकते हो। स्क्रीनशॉट्स ऐड करने के बाद वो आपके लिए यूआई बना देता है, तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ठीक है, डन विद दैट। एनी अदर? आई डोंट थिंक हमारे पास नेक्स्ट कुछ है। यस सर। सर, थैंक अ, यू सो मच for sharing your expertise and taking us through the MERN stack in such a detailed and engaging manner. I am ओके, sure everyone here is leaving with a wealth of knowledge that they can apply to their own development journeys. Thank you all for attending this session at Live the Code 3.0, organized by Geeks for Geeks ADGIPS chapter. We hope you found it valuable, and we look forward to seeing you in our upcoming events. Have a great evening and happy coding. Thank you so थैंक यू much. शिल्पा। Thank you and bye everyone. Hope for a good future and best of luck from my side. Bye everyone.